मैं आपके साथ दो अहम मुद्दों पे ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला है मुद्दा जो तिब्बत का, और दूसरा होगा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो वेस्टर्न प्रेस बहुत शोर मचा रही है उसके बारे में। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट तिब्बत। नाउ तिब्बत आप जानते हो इज ए कंट्री ऑक्युपाइड बाय चाइना, और उन्होंने ये कंट्री ऑक्युपाई किया था 1949 में, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक इन्वेजन किया तिब्बत का। और तकरीबन 80,000 सोल्जर्स चाइनीज़ के तिब्बत पे ऊपर हमला कर रहे थे। एंड तिब्बतन्स के पास कुछ नहीं था, उनके पास पुरानी एक दो चार मस्केट्स थी, आर्टिलरी भी नहीं थी, नथिंग, एंड दे वर डिफीटेड। उस वक्त एक बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी, एंड मैटर वाज रेफर टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनके पास एक बहुत तगड़ी फौज थी कि सर आप इंटरवीन करिए तिब्बत में एंड चाइनीज़ को अपोज करिए, बिकॉज तिब्बत जो है एक बफर स्टेट है फॉर इंडिया बिटवीन चाइना एंड द इंडियन स्टेट। अंग्रेज़ों ने ये कोडिफाई कर दिया था 1913 की शिमला कॉन्फ्रेंस में। पर जवाहरलाल नेहरू, जैसे आप जानते हैं, ये एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते थे, और इनकी फिलॉसफी ये थी कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा एंड वी शुड डिसरिगार्ड तिब्बत कंप्लीटली। उस वक़्त मेरे ख्याल में सरदार पटेल ने एक खत भी लिखा था जवाहरलाल नेहरू की इंडियन आर्मी इंटरवीन करे तिब्बत में, बट पटेल को नकार की रिक्वेस्ट नकार कर दी गई, एंड द नेट रिजल्ट वाज दैट द इंडियन आर्मी जस्ट डिड नथिंग एंड एंटायर तिब्बत वाज ऑक्युपाइड बाय चाइना। अच्छा, उसके बाद में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू recognize the People's Republic of China by sending our ambassador to Peking in those days. ये बहुत अफसोस की बात है कि दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन टुक प्लेस अंडर पंडित नेहरू, बिकॉज ये एक ऐसा शख्स था जिनको ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, ही डिडंट नो एनीथिंग। एंड ये अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए ये कर्सी जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, हु प्रेफर्ड हिम ओवर पटेल। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि ऐसी बात नहीं कि पटेल इनसे बेटर था या वर्स था, बट नेहरू पावर में आ गए, सीट में आ गए, तो ही थॉट मैं बड़ा एक थर्ड वर्ल्ड स्टेट्समैन बन जाऊंगा, आई शुड मेक फ्रेंड्स विद चाइना, एंड हिज concept of the world was that the greatest danger to the world is from imperialism and colonialism. और उनको ये समझ में नहीं आया कि imperialism and colonialism is a gone phenomena. In fact, after the defeat of Germany in 1945, the colonialism ended because उसका कारण ये था कि हिटलर ने इंग्लैंड का रस निकाल दिया, रादर जूस निकाल दिया था, and England was totally on its knees. They could not control the colonies. एंड जब इंडियन कमांडर जो थे उस टाइम फील्ड मार्शल चुनने को पूछा गया कि आपको कितने सोल्जर चाहिए इंडिया में हमारा राज काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आई नीड 500,000 ब्रिटिश सोल्जर्स। दे वर नॉट अवेलेबल एंड अमेरिका वाज नॉट इंटरेस्टेड, एंड सो नेट रिजल्ट आप जानते क्या हुआ, ब्रिटिश यहाँ से भाग गए, एंड वंस देयर प्राइम कॉलोनी दैट इंडिया फेल आउट ऑफ देयर ग्रास्प, द एंटायर ब्रिटिश एम्पायर क्रम्बल्ड विद इन 2 years। फिर फ्रांस आए, वो भी ख़त्म हो गए। सो अल्टीमेटली नेहरू वॉज रॉन्ग टू से दैट कलोनियलिज्म इज एन इशू which had become dead after the second world war। तो उस वक्त अगर नेहरू वाइज होता, had he looked into the future, he would have realized कि इंडिया का राइवल चाइना ही रहेगा, and the Chinese were very clever, they went and occupied not only the whole of Tibet, पर नेहरू को पता ही नहीं चला कि एक एरिया है जो अक्साई चीन का है, विच हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडिया फॉर अबाउट 100 years, एंड उस एरिया को भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और नेहरू जी जो थे हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, डिडंट नो अबाउट इट।
नाउ ये एक बहुत अफसोस की बात है कि ये सिचुएशन हुई। एंड ये जो एरिया था अक्साई चिन, ये 30,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया जो चाइना ने कैप्चर कर लिया और इंडियंस को पता ही नहीं चला। उसका कारण ये था कि नेहरू डिड नॉट सेट अप एनी एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस रीजन। भाई आप जब कोई एरिया क्लेम करते हैं, यू हैव टू शो द फ्लैग। आपको अपना झंडा दिखाना पड़ता है कि लोग हम कंट्रोल करते हैं। ही डिड नथिंग। इनफैक्ट ही केम टू नो अबाउट इट ओनली आई थिंक इन 55 और 56, when an Indian border patrol found that the Chinese had built a road through this area too, from Tibet to Xinjiang. So then Nehru made a statement that this road can be used for civilian purposes. But Nehru was, just barking around the wrong tree, और कैरवन आगे निकल गया, and Chinese didn't bother about Nehru at all. फिर 62 की वॉर आई और नेहरू जो था was found to be wanting. इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी हार हुई इंडियन आर्मी की। 3,000 हमारे सिपाही मारे गए और तकरीबन 3-4 हज़ार रुपया प्रिजनर ऑफ वॉर भी ले लिए गए। और नेहरू की जो शक्ल थी, वो जो ग्लो करती थी, वो काली हो गई। आई मीन ही कुड नॉट शो हिज फेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट। खैर जेंटलमैन, कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में रही फॉर द नेक्स्ट 60 ईयर्स एंड पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। आस्ता आस्ता चाइनीज कंटिन्यूड इंक्रोचिंग ऑन द एरिया एंड दलाई लामा जो थे, जो 1959 में तिब्बत से भाग के इंडिया में आए थे, उनको एसाइलम ज़रूर दे दिया, पर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर ग्रेटली कर्टेल्ड। एक तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी आई, धर्मशाला में बनी, पर उनको कोई पावर नहीं थी और इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्रीटिंग देम विद वेरी कोल्ड शोल्डर्स। And matters came to a head, particularly when Narasimha Rao was Prime Minister, and then that famous Sardar, I really feel very ashamed when I have to take his name, and he was Manmohan Singh. और इन्होंने बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर दिया रिलेशनशिप विद दलाई लामा, चाइना को खुश करने के लिए। अमेरिकन्स ने इम्पोर्टेंस दिया चाइना को, सॉरी दलाई लामा को। दे कॉल्ड हिम ओवर to America. He was given the Nobel Peace Prize also, but Indian government ने उसके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, बिकॉज ये चाइना से डरते थे। दे डिड नॉट वांट टू एंटेगनाइज चाइना, बिकॉज चाइना ने क्या दिया था कि जो दलाई लामा है, ही इज़ ए रेनिगेड एंड ही इज़ ए एंटी रेवोल्यूशनरी, एंड इसके साथ जो दोस्ती करेगा वो हमारा गुस्सा देखेगा। एनीवे, अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट आपको पता ही है बिल्कुल डिफीटेड हो गई है। इवन इस बार 2024 इलेक्शन में भी कांग्रेस की सिर्फ 99 सीट्स आई हैं 543 में से, एंड देयर इज़ नो चांस दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट और एनीथिंग लाइक दैट और वी क्लोज टू इट। तो सिचुएशन ऐसी हो गई अब कि तिब्बत को फिर से इम्पोर्टेंस दिया मोदी गवर्नमेंट ने, और ये भी बाद में दिया। लेट मी टेल यू, इनिशियली मोदी जब पावर में आए, ही ऑल्सो वाज थिंकिंग कि आई विल हैव ए डिटेंट विद चाइना, दोस्ती करूंगा, एंड ही मेट द चाइनीज प्रेसिडेंट 19 टाइम्स। आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन। एंड इसको ये नहीं पता कि चाइनीज की माइंड क्या थी। ही थॉट ही विल प्लिकेट चाइना बाई ए ईयरली मीटिंग एंड ऑल दैट विच वी आर डूइंग विद प्रेसिडेंट जी। उनको अपने होम टाउन में भी लेके गए, उनको झूले में बैठाया। ही डिड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक फ्रेंड्स विद चाइना, बट चाइना नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज चाइना का एक वन पॉइंट है कि दे वांट टू बी द ग्लोबल नंबर 1, एंड वो अमेरिका को भी नंबर 1 नहीं बनाना चाहते। एंड एज फार एज एशिया इज कंसर्न, ऑल्सो दे वांट टू बी नंबर 1, एंड दे कैन नॉट टॉलरेट अ कंट्री like India to be the number 1 power or even number 2 in the world. They don't want India to be having any significant status in the world. This was accepted by that famous Sardar, as I told you. He had accepted it. But Modi wanted to exert himself. He started on the wrong track, but he quickly changed tracks when he realized the true intention of the Chinese. And 2020 May there was a border clash between India and China, but 20 Indian soldiers died. And it was a very sad occurrence. And Chinese भी 2-4 मरे, but the onus was that the Indians had more casualties. उसके बाद में मोदी woke up and इन्होंने एक ओपनिंग की अमेरिका को। अमेरिका कब से ओपनिंग चाह रहा था, एंड अब सिचुएशन ऐसी आ गई है
कि एक अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया में आई है। नैन्सी पेलोसी इज ऑल्सो इन इंडिया, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर में भी इंडिया में है। एंड द अमेरिकन कांग्रेचुअल डेलीगेशन लैंडेड इन धर्मशाला, जहाँ ये दलाई लामा की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उससे उन्होंने मीटिंग की। एंड दे गिव लॉट ऑफ ऑनर टू दी दलाई लामा। एंड उनके जो लीडर हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने प्रेसिडेंट यी को कहा कि आपकी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में नहीं रहेगी, आप मर जाएंगे और चले जाएंगे, बट जो दलाई लामा है his contribution to world peace will remain, and he will remain a beacon for the peace-loving people of the world. ना ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट चीज़ है कि अमेरिका ने इमीडिएटली तिब्बत के पीछे अपना हाथ रख दिया है। एंड ऑब्वियसली द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो इज हैंड्स इन ग्लव विद द चाइनीज, एंड दे हैव अलाउड the American delegation full power to say what they want to in India, and obviously it has the approval of Mr. Jaishankar, the Indian foreign minister, including Modi, of course. But China worried हो गया है. Now let us be very frank about it. अब geopolitical situation change कर रही है, it's changing very fast. एक टाइम था जब इंडिया जी हजूरी करता था चाइना को हाथ जोड़ के जैसे 3 bags full, वो चीज़ नहीं रही अब with Modi in power. Because Modi tried to be friends with China, but China was not interested in India's friendship. Though we have a trade of $130 billion with China. So question is, what was Modi planning at that time? He was planning that his enemy is only going to be Pakistan and he'll sort it out and China के साथ detend कर लेंगे and India will rise up. Well, China didn't accept this provision, and what China accepted was that we don't want accept this. We want to be number 1. You will remain number 2. Please keep your अपनी औकात में रहिए. But now China is worried. और जब ये delegation आई है, it is clear the world is waking up to China and the occupation of China more important of Tibet, जहाँ Tibetan rights जो है वो trample हो गए हैं, and their religious institutions are being destroyed. मुझे खबर है कि जो चाइनीज नन्स जो तिब्बतन नन्स हैं, बुद्धिस्ट नन्स who have taken an oath of celibacy, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती चाइनीज सोल्जर्स के साथ शादी करा दी, एंड दे थॉट दे विल स्नफ आउट चाइनीज तिब्बतन कल्चर. पर अभी कल क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ही है ये टॉप तिब्बतन टेम्पल में जाके प्रे किया है. ही वांटेड टू शो द तिब्बतन भी लोग हम आपके साथ ही हैं. Now he had not done this for the last many years. No Chinese president had ever gone to a Tibetan temple or pagoda, but this is what has happened yesterday. And this is because of a fear the Chinese have that the Americans are going to intervene in Tibet. Now एक बात याद रखिए, America is a very big superpower. उनके पास इतने पैसा है, इतनी इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है कि अगर वो डिसाइड कर लें कि हमने तिब्बत को सपोर्ट करना है तो दे विल ब्लडी वेल सी टू इट दैट तिब्बत बिकम्स फ्री एट सम स्टेज. सो मेरे ख्याल में अब सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज एंड चाइना अंडर प्रेशर आ जाएगा, एंड दैट वी शुड एक्सेप्ट इट. द चाइनीज themselves do not know what is happening to them. China's economy also is going down. That is number 1. Number 2, the Chinese do not have any friends in their region. अगर आप नॉर्थ में देखिए, साउथ कोरिया है विच इज नॉट देयर फ्रेंड, देन जापान इज नॉट देयर फ्रेंड, देन इवन वियतनाम इज नॉट देयर फ्रेंड, फिलीपींस इज नॉट देयर फ्रेंड. तो इनका कोई खास फ्रेंड है नहीं. एंड बाय फोर्स वी हैव अ वेरी फुलिश लीडरशिप इन नेपाल विच इज डूइंग जी हजूरी टू दी तिब्बतन चाइनीज. वो सलाम करते रहते हैं उनको, थिंकिंग कि हमको कुछ क्रम्स मिल जाएंगे फ्रॉम द टेबल और हम अपनी दाल पर खा सकते हैं. बट नेपाल डजंट नो कि तिब्बत का क्या हाल हुआ है, वही हाल नेपाल का होगा. एंड इफ इंडिया इज नॉट देयर टू स्टॉप चाइना, नेपाल विल बी टेकन ओवर बाय चाइना कम्प्लीटली. ये नेपालीज की जो लीडरशिप, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, और समझ में जब ही आएगी जब ये कम्प्लीटली हान कल्चर के नीचे आ जाएंगे
and the Nepali women will be taken away to China. Because China में there is a shortage of girls. And जैसे पाकिस्तान से वो लड़कियां लेके जा रहे हैं, वो नेपाली लड़कियां लेके जाएंगे and marry them and then throw them away. But anyway, this is an aside which I am giving you. The factual situation is that the situation in Tibet is changing very fast, and let us see what happens further. The Americans are now have given a warning to China that it better be careful. ये एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ. दूसरा पॉइंट which I want to briefly discuss is कि lot of allegations are there कि हमारे जो रॉ हैं they are carrying out some extra judicial killings all over Pakistan, America, Canada and the United States. इसमें मेरे ख्याल में कोई खास ट्रूथ नहीं है. Maybe some people have been hired and killed. This is part of the game because international espionage agencies में सब होता जाता है. पर बिगर डेंजर इज कि कनाडा में जो एक नॉन टेररिस्ट है मिस्टर निजर, he who had been shot dead has been honored with by the Canadian Parliament. Now ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि what Canada is going to get out of this by honoring Niger, who was a known terrorist, and they are thinking to pressurize India. Actually, it is a question of vote banks. The Sikhs form a significant vote bank in Canada, and ये vote चाहते हैं. Trudeau want vote, and he is playing the खालिस्तानी card. पर इसको ये नहीं पता जो खालिस्तानी हैं ये किसी के दोस्त नहीं होते. They are not friends of anybody, and least of all ये चाइना के कनाडा के कोई फ्रेंड नहीं है. And in due course of time, this movement is bound to collapse, and if it rises up, it will only disturb Canada. India को कुछ नहीं होने वाला because India can easily crush any Khalistani movement here, whatever the support it has at any time. And Sikhs must remember they are just a small mutti bhar Sikh hain. They are not a vast population like Sunni Islamis or Catholics. They can sit and dictate to everybody. They are a very small minority, and a lot of them are business community, want to live happily, earn money and go. And Sikh community is very rich. They want to enjoy the fruits of whatever they are earning. But unfortunately, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, this is spoiling entire thing, is spoiling the name of the Sikhs also. And अभी जो एक कनाडा में परेड हुई है उसमें even they have shown the photographs of the man who engineered the famous bombing of the Air India plane, which was blown up at a height of 31,000 feet, and 329 people died, including 268 Canadians. So Canada is not bothered about that. They are not bothered. So basically, it's a very short-term policy, and Canada must remember it is not a global power. Canada की जो भी power है is from the sunlight of America. America also, I think, has a lot to answer for supporting people like गुरपतवंत सिंह पन्नू. अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक आदमी है मिस्टर निखिल गुप्ता जिसको अरेस्ट करके हंगरी से ले गए हैं. And he has been extradited from Hungary, and he is being put on charge for an attempt to murder Gurpatwant Singh Pannu. And in case he is found guilty, which 99% he will be found guilty, because the American press and the the courts are all totally biased. You can see how they are dealing with Donald Trump, the aim being to debar him from contesting the next elections. And the whole thing is being orchestrated from the back by Obama. In fact, for the last 12 years, the man running the government in America is Obama. And as you all know, he is having a pedigree of a Muslim. He has gone to a Muslim madrasa. His father was a Muslim. And I think he has latent sympathies with the Islamic world. And that is the reason he is going soft on Iran. America doesn't want to fight Iran. That is the latest I'm hearing. And even their battle against the Houthis is just, makeshift. So, gentlemen, this situation is that India's name will get besmirched. Assuming the fact that the RAW is carrying out some activities,
there is a very great need that you put the whole thing in a professional manner. The Russians carry out so many things, but no Russian has ever been caught for the killings which they are carrying out all over the world. In fact, if I recollect, some time back, even two Russian businessmen were killed in Bhubaneswar or something Puri in India. And so many of the opponents of the Soviet Russian regime have been sent to the next world. But no American, there have been accusations against Russia, but nobody has been able to catch any Russian for these things. The very fact that this man Gupta has been caught, I don't know whether he's involved or not involved, because it could be a decoy by the Americans to put pressure on India. I mean, the Americans are capable of inventing evidence also. At the same time, now things cannot be going on as it is, because yesterday a colonel who was in brigadier who was involved in the, I think, 2018 attack on Pathankot base has been shot dead in Pakistan. Now, who did it? We do not know. Nobody can say that Raw did it or something like that. But the fact remains that in case these things are done by Raw, they are all to be done in a very professional manner. You can't have a casual, easygoing attitude and then put some money here and there and say, it's abuse Kumar or something like that. It has to be meticulously planned, because the Americans have counter-intelligence agents all over, and Gupta, I believe, was caught in that. He's paid 15,000 rupees to a man to kill, who was to kill Guru Patwant Singh Pannu. And in the bargain, this man actually turned out to be an American double agent. वो एक double agent था, उसने जाके सारी information CIA को बता दी, and net result थी CIA ने इस आदमी को observation पे रख लिया. एंड एक ये बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था. अगर इसने कोई ऐसा काम किया भी है, आई थिंक पहली काम उस करना था कि वहाँ से छोड़ के वो इंडिया वापस आ जाता. और अगर उसने काम नहीं किया, अमेरिका ने कुकड अप एविडेंस की है, देन अमेरिका से कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते आप. बट एट द सेम टाइम अमेरिका इज वांटिंग द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया, बिकॉज उनको चाइना के अगेंस्ट एक ऐसा नेशन चाहिए जो चाइना की मुकाबला कर सकता है. आई कैन टेल यू, सारे कंट्रीज में से आप देख लीजिए, कोई कंट्री वर्ल्ड में नहीं है जो चाइना का मुकाबला कर सकता है एक्सेप्ट इंडिया. जापान तो वैसे ही एजिंग पॉपुलेशन है, उनको पता नहीं चल रहा आगे जाए पीछे जाए, दे आर ड्राउनिंग. एंड फिलीपींस के पास कोई पावर ही नहीं है. और जो नॉर्थ वियतनाम, अभी वियतनाम है, दे आर ऑल्सो incapable of fighting the Chinese. Russia जो है as it is pressed down very badly in the Ukraine battle, and Russians को चाइना के साथ दोस्ती रखनी है. They don't want to fight China at all. So the only country which can oppose China is India, and that is the reason the Americans will approach India. इंडिया को अप्रोच करेंगे और इंडिया से प्लीड करेंगे, भाई आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. आई थिंक आप देखिए, सिक्योरिटी एडवाइज़र भी यहाँ है, अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र हैज़ कम हियर. तो इंडिया को हार्ड बार्गेनिंग चिप करनी चाहिए. आई डोंट नो वेदर पॉसिबल है कि नहीं, बट अगर ये निखिल गुप्ता जो है, हु हैव बीन अरेस्टेड एंड टेकन टू न्यूयॉर्क, अगर ये आदमी इज़ रियली इन्वॉल्व, तो अपने नाम के लिए इस आदमी को रिलीज़ कराना पड़ेगा वहाँ से, फ्रॉम द अमेरिकन कस्टडी. एक हार्ड बार्गेनिंग चेक क्या, बिकॉज अमेरिकन आर वेरी ग्रेट बार्गेनर्स. सो जेंटलमैन, ये वैसे बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि असैसिनेशंस तो होती रहती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर जब भी कोई असैसिनेशन करता है, उसको इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो पकड़ा नहीं जाए. अगर वो पकड़ा गया, देन इट इज़ बिकम्स ए वेरी अनप्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग. आई डो नॉट, ये किस लेवल पे काम चला है क्या नहीं है, बट एक चीज़ याद रखिए, कनाडा एंड अमेरिका जो है, इनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. एंड दे आर नाउ, आई एम हियरिंग इवन वांटिंग टू सेट अप ए स्मॉल क्रिश्चियन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, और वो फेल हो जाएंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड अमेरिका इटसेल्फ is going to be in knee deep in trouble. So ये देखना पड़ेगा gentlemen क्या हो रहा है. The world is in a state of flux, and the biggest danger in the world is China, which is like a bull in a tea shop, और वो इधर उधर तोड़ रहा है, सब कर रहा है.
बट वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि अब ये डिकेड ऑफ इंडिया है, मोदी ये करेगा, मोदी ये करेगा. एंड मुझे अभी तक समझ में नहीं आई. आई ऑल्सो डू एस्ट्रोलॉजी कि किस तरीके से 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरकास्ट की कोई 350 सीट आएगी, कोई बोल रहा था 400 सीट आएगी. हाउ डू यू कैलकुलेट सीट्स? यू कांट कैलकुलेट सीट्स, यू कैन ओनली से हु विल विन. एंड बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी जो थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, वो फेल हो गए. उन्होंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जो कह रहे थे 415 सीट आएंगी और वो आई 240. सो इट्स ऑल जस्ट शोज दैट व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स से कि अभी एरा ऑफ मोदी स्टार्ट हुआ है इज नॉट करेक्ट. मैंने एक मोदी का चार्ट बनाया था और मैंने कुछ और फोरकास्ट दी थी. मैंने कहा था कि मोदी के होरोस्कोप में 12th हाउस इज द नेपोलियनिक हाउस विच अल्टीमेटली शोज डिफीट. वेल जेंटलमैन, ये तो आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग. मेरे का इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ नरेंद्र मोदी. इन द मीन वाइल जेंटलमैन, आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. एंड लुक आफ्टर करिए अपने आप को. गुड बाय.